अस्सलामु अलैकुम। क्लास 11th बायोलॉजी के प्यारे स्टूडेंट्स, बॉटनी स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका दिल से खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड के टॉपिक को डिटेल से समझेंगे। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे पंजाब बोर्ड के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टाइटल: बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। द साइंस ऑफ बायोलॉजी हैज बीन हेल्पिंग मैनकाइंड इन मेनी वेज इन फूड प्रोडक्शन, इन कॉम्बैटिंग डिजीजेस and in protecting and conserving environment. Biological advances in the field of food and health have resulted in higher quality of living. उर्दू: बायोलॉजी की साइंस मैनकाइंड की मदद कर रही है फूड प्रोडक्शन, डिजीजेस कंट्रोल और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में। इससे लाइफ की क्वालिटी बेहतर हुई है। 1. Plant production. Plant production has been tremendously increased by improving varieties and developing new high-yield and disease-resistant varieties of crops. Example crops: wheat, rice, corn, etc. Urdu: plant production को high yield और disease resistant varieties बनाकर बहुत बढ़ाया गया है, जैसे wheat, rice, corn. 2. Animal production. Plant and animal breeders have developed, through selective breeding, principles of genetics, new better varieties. Poultry breeders have developed broilers for getting quick and cheap white meat. Disease-resistant and other desired traits are introduced into plants and animals using modern technology of genetic engineering. Such transgenic plants can be propagated by cloning. Urdu: selective breeding or genetic engineering से better animal or plant varieties बनाए गए हैं. Broilers से सस्ता white meat मिलता है. Transgenic plants cloning से propagate किए जाते हैं. 3. Disease control. Identical copies of organisms' cells are produced using special techniques such as tissue culture techniques. Plant pathology is used to control diseases which weaken plants and reduce yield. Traditional control methods. Use of chemical fungicides and insecticides. These can cause problems for human beings and also for the environment. Nowadays, chances of insects becoming resistant are eliminated by using some living organisms that control or destroy pests and diseases. Example: aphid that attacks walnut tree is controlled biologically by parasites. Urdu: tissue culture से identical copies बनाई जाती हैं. Plant pathology से diseases control होते हैं. Chemical pesticides के बजाय biological control better है क्योंकि resistance कम होती है. 4. Bio-pesticides and integrated disease management. Even some bacteria are used as bio-pesticides. Effective control of particular diseases and common plant diseases can be done using all relevant and appropriate methods. Such an approach for disease control is called integrated disease management. Urdu: bacteria भी biopesticides के तौर पर यूज होते हैं. Integrated disease management में सब methods मिलकर यूज किए जाते हैं. 5. Soil and hydroponic culture. Soil is a complex medium. It is almost impossible to conduct experiments on the nutrient requirements of plants by growing them in soil. Hydroponic culture is used to test whether a certain nutrient is essential for plants or not. In this technique, plants are grown in aerated water to which nutrient mineral salts have been added. Hydroponic farming is not yet feasible. Astronauts may use it to grow crops. Urdu: hydroponic culture में plants को water में nutrients देकर उगाया जाता है. इससे न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स टेस्ट किए जाते हैं. अभी फार्मिंग के लिए फीजिबल नहीं, लेकिन स्पेस में यूज हो सकता है. 6. Food preservation. Different techniques of food preservation have been developed for preservation of food from spoilage and for its use and transport over long distance without changing quality. One of these is pasteurization, developed by Louis Pasteur. It is being used for preservation of milk and milk products. Urdu: food preservation techniques of food spoilage से बचाया जाता है. Pasteurization Louis Pasteur ने develop की थी, जो milk products के लिए यूज होती है. Key points: biology improves food production, health, and environment. High yield and disease-resistant crops increase food production. Selective breeding and genetic engineering improve animals and plants. Transgenic plants plus cloning help in better crop production. Biological methods help in disease control, environmental protection, and food preservation. Urdu: biology, food, health, or environment improve karti hai. High yield crops, genetic engineering,
biological control और food preservation से mankind को बहुत फायदा हुआ है. Biology continues to serve mankind by improving our food, protecting our health, and conserving our environment for a better future. Dear students of Botany Study Hub, इस topic को अच्छे से revise करें. Plant or animal production, disease control, bio-pesticides, hydroponics और food preservation याद करें. पंजाब बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत important है. चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें. Best of luck. Study smart, score high. Allah Hafiz and thank you for watching.